बिकॉज आफ्टर 5 क्लासेस यू विल से सर वो समझ मुझे याद नहीं है ग्रेविटेशन कैसे डिराइव किया था. दैट्स व्हाई वीडियो रहेगा. सी what is work done by a force if the displacement is dx? What is the work done by a force? F dx. F dx. Okay, F dot dx, F dx. ठीक है. Okay. So suppose there is a trolley or something of mass m and I'm applying a force of, लिखते जाओ इसको, ठीक है, applying a force F, and then because of that I displaced it by dx. What is the work done? dw is F dot dx. ठीक है, F dx, and because they are in the same direction it is F dx, F dot dx. F dot dx becomes F dx. Okay, because they are in the same direction. ये समझ में आ गया? ठीक है. अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है. अगर ऐसे दो बॉडीज हैं, देयर आर टू बॉडीज m1 और देयर इज अनदर बॉडी ऑफ मास m2. ठीक है. सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो बात, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर. ठीक है. एंड m2 बनाते जाओ इसको फटाफट. ठीक है, साइमल्टेनियसली. सुयश तुम्हारा वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ है. 1 second. ओके, कैन यू हियर सम साउंड? No. No, sir. Something like should I write in pencil? No? Okay. Okay, so yeah, by what is the force by which the m1 attracts m2 and the distance between them is r? Okay, what is the force? bolo jaldi jaldi bolo. Gm1 m2 by r. So this is the force and this is the same force, right? Yeah. Force है gm1 m2 by r square. So it is the f value is gm1 m2 by r square. अच्छा, now you tell me, suppose this system, रूपक, सुयश, मैं अगली बार मैं बता रहा हूँ किक आउट कर दूंगा वीडियो बंद है तो. सुयश, कैन यू हियर मी? सुयश, कैन यू हियर मी? ठीक है. Okay, see, so okay, if this system, suppose this system is kept in vacuum, imagine. Okay, can this system be stable? Is the system stable? Okay, will these balls remain like that? How does it matter if it's kept in a vacuum or not? I said I'm sorry to say vacuum. I should have said if the system is kept in a place where there is no effect of anyone else's gravity, basically in space, outer space. Okay, but this is not, this m1 is not attracted by anything else. That's what I meant to say. Vacuum was around. Okay. So will these balls remain at the same place? Yes or no? ऐसे छोड़ दिया इन दोनों को, क्या ये सेम पे रहेंगे कि पास में जाएंगे? क्या होगा? क्या होगा? They'll be attracted towards they're attracted. ये force of attraction है ना, तो ये दोनों पास में जाएंगे, right? Yeah. है ना, ये पास में जाएंगे. ठीक है. यानी कि if you have to keep this system like that, you have to apply a force on this ball and as well as this ball, right? किस तरफ? right, रेड वाले बॉल को किस तरफ फोर्स लगाना है अगर ऐसे ही रखना है इसको तो? if you want to keep it like that only, right? How much exact same, no? F. Yeah. So this F is who is applying this force? Which one? This pink force.
पिंक फोर्स M1? कौन अप्लाई, नहीं पिंक फोर्स कौन अप्लाई कर, M2. no it is not applied by M1. M2. Pardon? The red ball. Who is applying, see, once again listen to my question. Is my network bad? No. Okay. The red ball is attracted to the left because of the black ball's gravitation. That force I have shown by orange F. To keep the red ball at that place only, there should be a applied external force F, which is in pink in the opposite direction. Do you understand that? Yes. That pink force is applied by an external agent. It is not due to gravity. It is there to balance the gravitational force. Okay. That's a different body. Something, suppose, no, we are not discussing who is applying, what body is applying that F. We are discussing pink F is an external force, that's it, to this system. For M2 to stay stable. Yes, and also you have to apply the same force F on this ball for it to remain stable, right? Yeah. Write this quickly. Yes, Sahana, what are you asking? I asked if it's like the pseudo force. No, it is not pseudo force. It is not pseudo force. Also, right about these two forces I'm talking about now, these two green forces. Okay, okay, look, you see, write if these two green forces, which are these two green forces, Mahek, you explain them to me. The green forces कौन से हैं जो मैंने शेड किए हैं? One is like the force of attraction between those two particles, and one is the external force for M2 to stay stable. Very good. और attraction की जगह तुम ये भी बोल सकते हो, it is force on M2 by M1. Okay. ठीक है. Are these action reaction, ये लिख लो. Are these action reaction? लिख लिया. Are these action reaction? Answer क्या है इसका? They are right. No, they are they're not not. action reaction. Why they are Action not? reaction is Because that's a different force. The Pink one is a different force. Whenever Sahana is trying to say something, the voice coming is really bad. They're acting on the same body, right? They're acting on the same body. हाँ, they are acting on the same body. No, cause they, Sahana, you कुछ earphone use करो, तुम्हारा voice और network. I can't. You sound like a distorted Batman. ठीक है? Okay. ये तो हो so गया. an action reaction be there without contact. Yeah, they can be there without contact. In fact, देखो ये जो force है ना, दोनों जो gravitation है ना, they are action reaction. ये ना दोनों orange forces है ना, they are action reaction. Okay, लिख लो both orange are action reaction. FF. Which is the action and which is the reaction? ऐसा कुछ नहीं होता. There is no action one and one reaction. दोनों उसमें से कोई भी एक action है, दूसरा reaction है. Okay. So are like ये दोनों pink वाले are action reaction. These two pink वाले are action reaction. Action reaction, pink is a action reaction pair, orange is action reaction pair. Okay. Okay. मैं तुमको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे एक टेबल पे आदमी खड़ा है, तो आदमी पे जो नीचे की तरफ वेट लगता है, उसका रिएक्शन क्या है? इस फोर्स का रिएक्शन कौन सा है? नॉर्मल. नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है. नॉर्मल नहीं है इसका नाम. ये तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं ना, दोनों आदमी पे लग रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकता है? तुम ये सोचो, ये एमजी कौन लगा रहा था आदमी पे? एमजी कौन लगा रहा है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एमजी? ग्रेविटी. ग्रेविटी है ना. तो आदमी जो अर्थ पे लगाता है ना, अर्थ पे ऊपर की तरफ आदमी भी लगाएगा एमजी.
That is the action reaction. The reaction for this mg is the mg acting on the earth in upward direction. Okay, center of the earth पे लग रहा है. Okay. अच्छा, फिर ये हो गया. चलो अभी ये हो गया. अभी लिखो. अभी सुनो, ये सब तो हो गया. ये तो फोर्सेस बेसिक हो गए. अब लिसन कि इफ यू हैव टू, अभी कब बताऊं, is this force, देखो F varies as R, right? As R, no? The F is not a constant. It is different for different R, right? So, अगर F constant होता, अगर if F was a constant, and if I asked you what is the work done when this M2 goes from R1, suppose R1 to R2, R2 डिस्टेंस पे जाता, ठीक है, तो हम सिंपल बोलते हैं वर्क डन कितना है, पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, F, which is a constant into displacement is R2 minus R. समझ में आया? पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, GM, मतलब वो तो कांस्टेंट है, मान लो G1 M2 स्क्वायर नहीं है, तो F पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट, R2 minus R1 F dot R2 minus. समझ में आ गया? ये वर्क, ये समझ में आ गया कि नहीं? So wait, you're moving the black body to that No, I'm nucleus, moving right? the black, I'm the red body to the left, right. Okay. So that is Give me a moment, the okay? N thing. That should be negative work, right? Because it's opposite. Time out for 1 minute, okay? Yeah. So, okay. So if you shift the red ball here, okay. Won't work done be negative because it's going in the direction opposite to the force? Very good, it is negative. Work done by force of gravity is negative, right? It is minus F dot whatever the delta R, right? So wait, we're moving the red one, right? So delta Yeah, R will be R2 yeah bro, delta R will be into R2 minus R1, no? cos 180. हाँ, cos 1, that's why यहाँ minus लिख दिया ना मैंने. हाँ, cos 180, because of cos 180 it is minus 1, right? You understood this? Akshat, you understood I this? didn't understand why it's R2 minus R1. देखो बेटा, पहले R1 डिस्टेंस था, अभी दूर चला गया, R2 हो गया, तो डिस्टेंस कितना मूव हुआ, R2 minus R1 डिस्टेंस मूव हुआ ना? I thought the distance. Okay. You're saying the whole length is R2. हाँ, whole length R2 है, yes. I thought only from the red ball Okay, to the okay, final. no, ये whole length R2 है, ठीक है? समझ में आ गया इतना? क्या Wait, है, so क्या वो? the M2 is moving towards M1, or is it going backwards? Backwards. Okay. M2 यहाँ से यहाँ जाता है जब, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगता है वो बैकवर्ड लगता है, ग्रेविटेशन का हमेशा बैकवर्ड लग रहा होता है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका राइट साइड में हो रहा है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, ये समझ में आ रहा है? Yeah. अच्छा, अभी एक चीज बताओ, वर्क डन तो हम ऐसे वी कांट फाइंड इट लाइक दैट ओनली, वी हैव टू, रूपक है ही नहीं इस क्लास में, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ही वाज देयर नो इनिशियली, आई थिंक कुछ पावर ओवर गया, ओके. सो सी, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रियलाइज दैट because the force is a function of time, to find the work done you have to integrate. Sorry, Yeah. what? Because force is a function of distance. मैंने time बोला था क्या? I am disoriented.
officially. Force is equal to mass into acceleration, right? Force of gravity is how Okay, much? okay. G and Then m2. Tm Huh. m1 m2 by By r square, right? So it is a function of r, the yeah. distance. Therefore, it changes at every point of time. Every Yes. every instance when it is skipping from one point to another point. The r increases, the force decreases, right? So it's an inverse relation. It is inverse square relation. Therefore, to find the work, you must integrate. Okay, yeah. Rohan, you understood this? Wait, why integrate though? I understood Because everything else, but why do you integrate it? because it is not constant. Because the force is not c. Suppose you take a distance r distance पे work force कितना है? It is F is equal to G m1 m2 by r square, right? Yeah. If you change this r, the force will change, no? Yeah. If you increase this r, the force will decrease. If you decrease this r, the force will increase. Understood? Yeah. Yeah. Therefore, if you want to Okay. find work, because dw is f dot dr, you have to integrate, right? Yeah. Okay. So Fine. let the लिखते रहो मैं Suyesh, what happened to your network? What, sir? What happened to your network? It's fine. Okay. Let the m2 be at a distance r, ठीक है, at some point of time. Okay. At some point of time ये r पे, ठीक है, r distance पे. अब एक बात बताओ. If you wanted to move by a distance dr, suppose बस dr move करना है, ठीक है, इतना यहाँ तक आके गया है, तो वर्क डन कितना है? What is dw? It is minus f dot dr. मतलब f dot नहीं लगेगा, फिर f dr हो जाएगा, right? And then what is f? F is equal to minus g m1 m2 by r square और फिर d. अंडरस्टूड? ये समझ में आया सबको? आगे भी समझ में? अब देखो, अब सपोज कि जो एक्चुअल जो बॉल था m2, वो है ना m2 जो है ना बॉल, वो एक्चुअली किसी r1 से it went from some blue distance r1, from some blue distance r1 to some green distance r2. मतलब इनिशियली यहाँ से यहाँ कूद के गया था, मतलब एक्चुअली यहाँ से यहाँ कूद के गया था. Then what is the limits of integration of r1 to r2? So what is the work done? Work done is integral dw is equal to minus, इसको इंटीग्रेशन करना है, g m1 m2 बाहर आएगा, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by r square dr. बेटा 1 by r square dr का इंटीग्रेशन कितना होता है? dr का इंटीग्रेशन इज minus 1 by r. क्यों? Because it is r की पावर minus 2 dr and r की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? r की पावर n plus 1 by n plus 1. n की वैल्यू कितनी है? -2. तो क्या होगा? -2 plus 1 which is r की पावर -1 divided by -2 plus 1 -1. इसको हम लिख सकते हैं -1 by r. किसको नहीं समझ में आया जल्दी पूछो. Who does not understand that 1 by r square integration is And -1 by r? what happens to dr? Dr should become r, dr is right? variable of integration. Oh. वो तो बस वो with respect to variable है. तो आंसर आएगा So -g m1 m2, ठीक है, इंटू -1 by r. और लिमिट्स क्या क्या है इसकी? r1 to r2, ठीक है. आ रहा समझ में? But this is too much to speak. Please contribute. Do you understand this? Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ कि कैसे, व्हाट इज द how did he get the limits? No, wait, can you go back? I did not draw. लिमिट. ये इसलिए क्योंकि बेटा वो जो बॉल था m2 वो कहाँ से कहाँ गया था? वो गया था R1 to R2. r1 to r2. इसलिए लिमिट Yeah, यहाँ fine. पे इंटीग्रेशन करते टाइम r1 नीचे r2 ऊपर है. Okay.
ठीक है। तो बेटा जब इसको माइनस जी एम वन टू बाय वन माइनस वन बाई आर, ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट पेज पे। माइनस वन बाई माइनस जी एम वन एम टू माइनस वन बाई आर और फिर वन आर वन टू आर टू। अब मैं इसको लिखूंगा अच्छे से, तो क्या आएगा माइनस जी एम वन एम टू माइनस वन बाई आर को ऐसे डालना है, यू हैव टू पुट लिमिट्स, तो माइनस वन बाई आर टू माइनस ऑफ माइनस वन बाई आर वन, ठीक है ओके। या फिर मैं इसको अच्छा से लिखने के लिए ना आर टू आर वन लिखता हूँ, मैं इसको आर एफ और आर ए लिखता हूँ। आर आई इज द आर इनिशियल, आर एफ इज द आर फाइनल। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई आर आई माइनस वन बाई आर एफ। समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? हेलो? Yes, yes. Which is also equal to g m1 m2 into 1 by rf minus 1 by ri। ये समझ में आएगा? ये वर्क डन बाई क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है कि नहीं? Okay. सही है? Yeah. ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? So you अब took the देखो minus sign inside. क्या बेटा, फिर से बोलना। मैंने माइनस साइन इनसाइड कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर जो बॉडी है m2, अगर जो m2 बॉडी है, ठीक है, वो m1 से दूर जा रही है, वो m1 से, if it is going away, if m2 is receding away, तो बेटा RF जो है वो RI से ज्यादा होगा, राइट? है ना? Yeah. तो बेटा 1 by RF क्या होगा? 1 by RI से कम होगा, करेक्ट? If 1 by RF is less than 1 by RI, this bracket is negative, right? Negative. Yeah. If this bracket is negative, work done by gravity is negative. Understood? Yeah. समझ में आया? Yeah. अच्छा, दूसरा Yeah. चीज, इसका उल्टा केस लिखेंगे। If m2 approaching, if m2 approaching, अपने आप भर दो, मैं तो बोलूंगा नहीं। The Right. gravity is positive. Positive. Yeah. That means Ri is greater than Rs and 1 by Rs is greater than Ri. हाँ, Which means अच्छा, अब एक जनरल डाउट आना चाहिए। देखो तुमने वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव करके रखा है, और इसको समझो कि m2 अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग मतलब क्या हो रहा है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, ये पीछे वाला लिख लिया सबने? yeah. फटाफट लिखो, इफ m2 अप्रोचिंग m2 w ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 0, ये भी लिखो। Okay. ओके, अब ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। आई वांट यू टू हैव अ डाउट, बट तुमको डाउट नहीं आ रहा है। फिर से मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि m1 है, m2 है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, खींच रहे हैं ना। Yeah. तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो नेगेटिव वर्क कर रही है। इफ m2 इज रिसीडिंग, m2 रिसीड कर रहा है मतलब m2 दूर जा रहा है, m2 दूर जा रहा है, m2 दूर जा रहा है, तो ग्रेविटी पीछे की तरफ लग रही है ना। ग्रेविटी तो हमेशा इस तरफ लग रही है, टुवर्ड द Yeah. सेंटर, Yeah. उसके दूसरे की तरफ। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वो कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? when m2 is receding, external agent is doing what kind of work, positive or negative? Positive. Positive, right? हाँ। Yeah. और जब m2 approaching है, तब external agent कैसा कम कर रहा होगा? Negative. नेगेटिव। अब देखो, अब डाउट आना चाहिए तुमको, वेरी सिंपल, कि बेटा m1 है, m2, ये दोनों तो इधर खींचते रहते हैं ना, हमेशा Yeah. खींचते हैं, कभी भी कहीं पर भी खींचेंगे, Yeah. ट्रिपल तो कभी करते नहीं। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, अभी भी तुमने अग्री किया है कि F एक्सटर्नल का वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इज पॉजिटिव इफ इट गोज फ्रॉम 1 to 2, इफ 1 to 2, ये तुमने अग्री किया है ना? Yeah. Yeah. है ना? तो तुमने ये भी अग्री किया है कि इफ 2 to 1 वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इज नेगेटिव, राइट? Yeah. मुझे नहीं Yeah. समझ में आ रहा है, मुझे डाउट है। अभी भी कुछ डाउट आया क्या? 2 to 1 ले जाना है इसको, और मैं बोल रहा हूँ कि F एक्सटर्नल को वर्क करना है। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ इसको, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव वर्क है। ऐसे क्यों? 2 से 1 जाने तो डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते क्या? छोड़ देंगे चला जाएगा अपने आप?
But still pulling it towards 2, right? क्या फिर से बोलना? It's still pulling it towards 2, right? मैंने बोला 2 पे अगर इसको मैं छोड़ दूं ऐसे ही, हाथ से नहीं पकड़ूं, Yeah. it will go to 1, right? Yeah. Do I Yeah. have as an external agent, do I have to do any work? You will have to But you're still applying a force, so the work you're yeah, doing. exactly. It'll just have to increase. क्या increase? Okay. फिर से बोलना. Actually, I didn't understand. My question is, if again listen to my question, do I as an external agent need to provide any force to make the body go from 2 to 1? No. Yes or no? Yes. No. No. I mean, body should go from 2 to 1 on its own. It's an attraction force, gravitation to attraction, है ना? 2 to 1. Okay, yeah. No, you don't need any. Then why am I talking of F external when the body is going from 2 to 1? Why am I Do you That's using? talk because about the external is force pulling of it. M1 on M2? Well, that is a gravitation force. I'm not talking of that. We talked of that earlier, right? If Yeah, M2 is so approaching, if it's going from 2 to 1, we talked of the gravitation. The work done by gravitation is positive. Of course, the gravitation is attracting it, right, all the way from 2 to 1, and it is going also in the same direction. So the work done by gravitation is positive. Understood? We talked of that. Now I'm talking of the external agent. Do I need to do any work? I as an agent? No, right? Yeah. But इसमें problem ये है, very you should understand, if it goes on its own, तब क्या होता है? It will catch up speed, right? Yeah. It will catch up speed, no? It will be like जब ये अपने आप आएगा तो क्या 1 पे KE 0 होगा कि नहीं होगा? why would it catch Yeah. speed? Isn't the force Yeah. constant? Which force is constant? The gravitational Gravitation force is constant when it goes from 2 to 1, and it doesn't matter whether the force was constant or not. See, पहले तो मैं ये बोलता हूँ, if suppose force constant नहीं है gravitation, even if the gravitation force is constant, 2 to 1 force लगा है ना gravitation का, right? So Gravitation why का will the kinetic energy be 0? As the अच्छा, body 0. goes from 2 to 1, the force increases. So that means that there will be some kinetic energy. Very good. There should be some kinetic energy. So if it goes on its own, KE is not It will have a at greater point of time. kinetic energy, but If if it it goes with the external force, it will have a lower goes kinetic energy. from 2 to 1 on its own, एक minute, its own, KE at 1 is not equal to 0, right? yeah. समझ में आया ना ये? So it will cross the first position. Pardon? It will cross the first position. I didn't understand what you're saying. So I mean, it will go ahead of the first position if K is 1 is not 0. हाँ. तो अभी मुझे what I want to do is I am applying an F external so that this body. अच्छा एक बात बताओ. Is the force of gravitation changing at every point of time? Yes. Yeah. So I apply the F external such that it is always equal to the force of gravitation. Okay. Therefore, it is Then there always will be no balancing. movement. Okay. Then there won't be any movement. We have discussed this before also. Whenever you want to find potential energy of a system, you don't want it to gain any KE. To not have the M2 gain any KE from going from 2 to 1, you must not give it any kind of acceleration because the initial speed is 0, right? If you don't want to give it any acceleration, the external force, the total force, net force on 2 at all times must be 0. Are you following me, everyone? Can you repeat that? Okay. First thing I want to ensure is that when body reaches 1, it should have KE 0. Why? Yeah. Because I want to find potential energy. Okay. You're Potential making energy it matlab? 0 or it is 0? Pardon? I mean, we're taking a case where it's 0 or it is 0. See, I want it to be 0. Okay. But अगर मैंने उसको ऐसे ही फ्री छोड़ दिया तो उसका KE 0 नहीं रहेगा, वो स्पीड पकड़ लेगा, राइट? हाँ. It will catch up speed. तो मुझे क्या करना है? अगर उसका KE 0 यहाँ पे करना है तो उसका हर पॉइंट पे, यहाँ पे U 0 के साथ छोड़ा ना, रेस्ट पे छोड़ा ना 2 पे, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए.
एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, राइट? Yeah. क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया जैसे ही v इज इक्वल टू u प्लस at, जैसे एक्सेलरेशन हुआ वेलोसिटी मिल जाएगी ना। Yeah. एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। दूसरा, v इज जीरो एट फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 2 to 1, तो लिख लो फ्रॉम 2 to 1 द v एट ऑल टाइम्स इज जीरो। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट? टू कीप द एक्सेलरेशन जीरो क्या करना पड़ेगा? हमेशा क्या करना पड़ेगा कि जो भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है m1 की तरफ, ठीक है, g m1 m2 बाई एट दैट पॉइंट क्या डिस्टेंस r स्क्वायर, दिस must be equal to f external applied. Correct? Correct? Yeah. Okay. Okay. 1 second. Okay. Now, if a is 0, f external is 0, that means every point of time, this f external applied must be equal to the gravitational force. Therefore, you have to at each and every point, you have to balance the gravitational force. Okay. उससे क्या होगा? Now, अक्षत का डाउट आएगा, सर अगर वो एक्सेलरेशन ही नहीं है तो मूव कैसे करेंगे इधर से उधर? इसका मतलब इसको बहुत थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाएगा एकदम थोड़ा सा आगे, फिर रुक रुक जाएंगे, राइट? क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम देंगे, टाइम थोड़ा भी ज्यादा दे दिया, क्या कैसे जाएगा ये? अगर इसका फोर्स हमेशा जीरो तो नहीं जा सकता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि Yeah. अगर I still don't get how it can move without no velocity, no हाँ, acceleration. 2 to 1, हाँ, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड डाउट। इसको हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, इसको लिख लो, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। और इसमें फंडा क्या है कि ये ना इनफाइनाइट टाइम में होता है, इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट टाइम। ओके, टेक्निकली मतलब Sir, can you प्रैक्टिकली इट इज repeat? नॉट पॉसिबल। Sir, can you repeat what you said? I I said couldn't it hear is called you. a quasi-static process. Before that, And it before that. before that, I said that it is not possible. We were discussing this from 2 to 1. Velocity at all times is zero. Acceleration at all times is zero. This we were discussing. So how does it move? He does it move ऐसे होता है, देखो यहाँ पे इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, सपोज का डिस्टेंस ना, सपोज ओरिजिन से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पे कुछ पड़ा हुआ है, एक मास m1 जिसको खींच रहा है m2 को, ठीक है, m2 पहले यहाँ था, अभी यहाँ है। ओके, तो इस पॉइंट पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, सपोज 2 मीटर है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। सो जो फोर्स होगा वो होगा, लेफ्ट साइड लग रहा होगा, वो लग रहा होगा g m1 m2 बाई 2 स्क्वायर 4, राइट? सही है ना? ठीक है, और तो तुम्हें जो एक्सटर्नल लगाना है वो लगाना है इसी के बराबर, g m1 m2 बाई 4। अब तुम बोलोगे सर आप इतना ही लगा रहे हो तो ये तो मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो क्या करोगे, थोड़ा सा एकदम एकदम टाइनी df थोड़ा सा कम करोगे फोर्स अपना, थोड़ा सा भी df कम किया तुमने तो अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन आएगा इस पे, ठीक है। बट अब तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन आ गया तो टाइम आ जाएगा, टाइम जैसे ही दिया तुमने दिया थोड़ा सा भी टाइम, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वेलोसिटी आ जाएगी, पर वो वेलोसिटी नहीं देनी है, टाइम इतना छोटा होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए कि वेलोसिटी नहीं मिले, बस ये थोड़ा सा इधर आ जाए, रेस्ट पे ही हो और इधर आ जाए, ठीक है, एकदम dx मूव हो जाए, dx। ओके ओके, dx मूव हो गया, यहाँ पे भी रेस्ट पे आ गया, ऐसी। But oh, like the dx to it for it to move dx also it needs a little bit amount of. बात तो सही है। I mean, what about Newton's law? I mean, inertia. कौन सा inertia? You think how can it move if there's no force? It would need like Won't it need at least that? a very tiny amount of force, even if it's like a very tiny amount it's moving. बात तो सही है, just give me 1 minute, okay?
Is this quasi-static force in like applied physics? Like, does it occur in the real world, or is it some concept in I didn't classical? understand what quasi-static process is. Is it something like Quasi-static process means it is a process that takes infinite amount of time. It is not. It is not practically possible. Theoretically, it is possible. so is it like anything what we would imagine to like stay still but move? What I went on, then it's like it happens so slowly. It still has internal equilibrium. Every time the ball is in a state of equilibrium, right? Because the F action is zero. So is it like something which would happen in space? It's not applied, right? It's not possible in the real world. It's not possible in the real world. You can't take infinite time for a process. You can take infinite time for a process, but you can't take right infinite time for a process. Why did we land on It this? means anything which takes infinite time. नहीं ऐसा नहीं है. Infinite time, and at every point of time the equilibrium should be maintained. Oh. That is a How did we quasi-static So, land process. can you into like show us a quasi-static? video on this or something? Okay, I वही still मैं don't get it. Wait, is this actually in like the gravitation chapter? the a better understanding of the quasi-static process, लेकिन फिर से you can is in the gas laws chapter, but then again you can ask the same question जो तुमने यहाँ पे पूछा ना कि सर थोड़ा तो फोर्स मिलके थोड़ा तो वेलोसिटी होगा. that you can, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, अभी कि कौन सा देखूँ मैं. I didn't understand anything though. Like quasi-static process is like, I didn't understand what it is. Is this then like the book? अभी हाँ तुम्हारे भी quasi-static process आएगा, उसमें thermodynamics chapter है ना कुछ. हाँ, chemistry. सेकंड बुक में है ना, नहीं सेकंड बुक में है ना एक कुछ. Physics. It's there. Chemistry or physics? Both have Both, it's there in both. दोनों में है, लेकिन केमिस्ट्री में उसकी बात नहीं होगी इस पूरी इतना सबकी. फिजिक्स में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं तुम्हारे टीचर, बट मैं तो करूंगा. मैं बताता हूँ, तुम लोग वीडियो बाद में देख लेना यार फ्रंट में. पर ये एक मिनट रुको, ठीक है. क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इन ग्रेविटेशन. हाँ, एक just 1 second more. Work done in a slow process. Gravitation. Because we'll see this video, okay. Yeah, share screen, see this video. No, it is not deriving. See this. Sir, can you unmute it? Can you unmute it? 1 second, मैं देख लेता हूँ इसमें वो है कि नहीं. Bring the bodies. हाँ ये देखो. See this video. No, I am giving you the link. You see this video. It's in the Zoom chat.
So we can't hear. I can't hear. Pardon, what? I can't hear the. I'm not speaking anything. I'm saying you to see the video. Okay. Hello, excuse me. Wait, are you gonna play it for us or do we have to watch it on our own? अच्छा ठीक है, सुनो everyone. I will play. Close your tabs. I will play. Okay. No, but we won't still be able to hear what that person is saying. लो अब सुनाई देगा, सुनो. And really only works at relatively short heights. सबको सुनाई दे रहा, दिख रहा है? Yes. This more general formula can be used at basically any distance and gives a total value, not just a change in GPE. So how do we know it's true? And consequently, how do we derive it? If you're familiar with some very basic integral calculus, then the proof I'm about to show you, mathematically speaking, will be very straightforward. However, the concepts are perhaps more difficult to truly internalize. So I'm going to start by defining gravitational potential energy in a way that maybe reveals why calculus is needed to rigorously prove the expression we're going to develop together. The gravitational potential energy of two bodies is the work done by some external force in bringing the bodies from when they were infinitely far apart to where they are now. Notice that we're talking about Everyone, इसमें he has skipped something. Without increasing its KE. क्या बोला उसमें? What he said? The gravitational potential energy of ये लिख लो of two bodies is the work done by some external agent. Okay. ये लिखो gravitational potential energy of two bodies is the work done by some external agent. where they are now. In bringing the bodies. Notice that from when they were infinitely far apart to where they are now. Okay, but without gaining velocity or with zero ke भी लिख सकते हो. Okay. How is that possible? What about the law of mechanical energy? क्या है law of mechanical energy? See, that K, the sum of K and PE, potential energy is always a constant, right? Like mechanical. If Correct. sum of K plus P is constant, if they're always constant. What is the always if? constant. Yeah, I mean, energy cannot be created or destroyed. बॉल पड़ी है यहाँ पे, बॉल पड़ी है ना यहाँ पे मेरे सामने. I mean, it can be dissipated. एक मिनट, very simple, very simple. एक मिनट. फुटबॉल पड़ी है मेरे पास सामने, ठीक है, जमीन पे. K कितना है? 0. Yeah. P कितना है? 0. Yeah. मैं आगे रोल कर देता हूँ. अब K कितना है? But that's because you're applying a force, right? हाँ तो मैं वही तब से पूछा ना, if when is K plus P constant? If no external force. हाँ, if no external force. लेकिन यहाँ पे external force दे रहे हैं ना. Okay. Fine. वो external force ensure कर रहा है कि K 0 हो उसकी. ठीक है? Okay. लिख लिया सबने? ये देखो, notice that we're talking about both bodies, but that question. we're talking about both bodies, but that questions often seem to ask about the GPE of one body. So when you're asked about the gravitational potential energy of just one of those masses, that isn't technically correct. I wouldn't write that on a test, but just keep it in mind.
I also want you to think about how we're imagining the object was brought in from infinitely far away. This process would have to have been done at some very low velocity in order to keep the kinetic energy low. क्या बोला देखो यही बस there is the only statement he has made about this process. So that's the क्या same, that quasi. हाँ इसने बस इतना ही स्टेटमेंट बोला इस पूरे वीडियो में. This process would have done at some very low velocity in order to keep the kinetic energy low. In fact low नहीं है, zero है. ये गलत बोला, low नहीं, zero. ठीक है? Yeah, I understand. All right. So let me repeat that definition before we get started, because I will rely on it हाँ ये heavily. लिख लो पूरा. ये तुमने लिखा है ना वैसे? Yes, sir. लिख लिया ना, ठीक है. When deciding the mathematics I'm going to do. The gravitational potential energy of two bodies is the work done by some external force in bringing the bodies from infinitely far apart to where they are now. So, let's get started. We know that we're looking for some work, and that work is force times distance. However, crucially, a major characteristic of gravity is the force is constantly changing as the distance changes, as can be seen by the fact that the force is dependent on the distance r. In fact, it's dependent on the inverse square of r. Nevertheless, our simple equation for work provides an important insight. All we're doing is finding the area underneath a curve whose axes plot force and distance. ये समझ में आया? Work is area under the curve. Yeah. It just so happens that the force is constant, FR curve, yes. and so we can just use the formula for the area Ask again. R as in displacement. Yes. of a rectangle. So, we've learned that the integral of force with respect to distance is work. That is why we need to integrate our equation for gravitational force, which you should hopefully know is big G, big M. अब देखो सुनो, वो उसने क्या बोला देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो एक बार. क्या लिखा था वर्क का, उसका पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ो. क्या लिखा था डेफिनेशन में? तुम्हारा वीडियो वो म्यूटेड है, तुम पढ़ो. The potential energy of two bodies is the work done by some external force in bringing the bodies from infinitely far apart to where they are now. किसका ये जो फोटो है, जो पिक्चर अभी है, उसमें वर्क किस फोर्स का निकाल रहा है? वो किस फोर्स का वर्क निकाल रहा है? वो ये कौन सी फोर्स है? Force of gravity, right? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का निकाल रहा है. ध्यान रखा है ना तुमने? Okay. लेकिन डेफिनेशन में किसका दिया है? एक्सटर्नल फोर्स का. Yeah. उस पे भी आएंगे, वो तो तुमको भी समझ में. चलो ठीक है, इसको पढ़ो पूरा. Seen in the definition to डेफिनेशन में क्या करना है? इन्फिनिटी से आर करना है. लेकिन अभी भी उसने ये किसका फोर्स है? ग्रेविटी का है. लेकिन मैंने तुमको बताया कि अगर के ई जीरो है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो जो एफ एक्सटर्नल है ग्रेविटी का ही इक्वल है और अपोजिट है ना. Yeah. समझ में आया? कि जो एफ एक्सटर्नल है वो हमेशा ग्रेविटी का इक्वल है और अपोजिट है. करेक्ट? Yeah. दिस अंडरस्टूड. देयरफॉर अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तब तो निकाल ही सकते हो जीएम में. तो उसके लिए स्लो प्रोसेस, हाई फास्ट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. तुमको हमेशा पता है फोर्स कितना है, gm1 m2 बार स्क्वायर इंटीग्रल dr आ गया. लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो तुमको चाहिए फोर्स डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. और इफ यू आर पुटिंग दैट फोर्स equal to gm by r square, that means you are saying at every point of time the external force was equal to the gravitational force, right? That means what body कैसे गया है without gaining any ke, right? आगे समझ में कि नहीं? So in this quasi-static force, there's no K, but is there work done? By whom? By Are the you saying? forward. देखो वेरी गुड. अगर तुम एक बॉडी सपोज रिसीड हो रही है, वो दूर थी और पास जा रही है, ठीक है? Yeah. और स्लोली जा रही है, बहुत स्लोली, जैसे क्वाजी स्टैटिक जा रही है, जैसे तुमने पूछा. बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? It will be negative. बेटा फिर से सोचो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाहर बॉडी पास जा रही है, पास जा I रही thought है. you said दूर जा रही है. Sorry. Oh, If it's sorry, going I'm close- sorry. अगर पास, ठीक है, दूर जा रही है तो नेगेटिव है वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट? तो वर्क Okay, सपोज because ग्रेविटी ने -10 जूल काम किया. there are two opposite forces which are equal. So Correct. both of them do equal but opposite work. वेरी गुड, वेरी That गुड. work will be
zero, net force is zero, but displacement. Net work is zero on the body. Net force is zero on the body. Because the net force is zero, the body does not gain any KE. But there's still displacement. There is still displacement. That is the quasi-static process. वो मैं नहीं अब इसमें नहीं जा सकता. Okay? You understood the point, but very clearly, right? Yeah. Apart from quasi-static process कैसे हो रहा है बाकी सब समझ में आ गया है? हाँ ठीक है. ओके. अब देखो इसको, अगर तुमको ये निकालना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है, तो Gmm/r² dr. अच्छा, जो बॉडी है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी टू r जा रहा है, मतलब पास में आ रहा है ना? इन्फिनिटी में पहले था, अभी पास में आ रहा है. ये बता दो, ये जो साइन मुझे अजीब लग रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी W किस तरफ होना चाहिए? किस तरफ होना चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट dr के ऑपोजिट होना चाहिए, dr के It should be opposite. ऑपोजिट ना? तो इन्फिनिटी इसके आगे नेगेटिव लगा होना चाहिए ना? Yeah. है ना? एक काम इसने शायद ध्यान नहीं दिया है, पर हम यहाँ कर लेते हैं. देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो वर्क आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसी को ये बोलेगा ना कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये जब इसको निकालोगे Gmm बाय 1/r² का इंटीग्रेशन कितना? -1/r ना? और इन्फिनिटी टू r, तो इसका आंसर आएगा Gmm, है ना? m. तो इसमें अब r डालोगे तो -1/r आएगा, लेकिन इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट? 1/∞ is 0. तो आंसर कितना है? -Gmm/r आया ना? दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? Yeah. एक मिनट, क्या उसने नेगेटिव वर्क किया है? हाँ, नेगेटिव वर्क किया है, तो ठीक है फिर ये. पर मुझे अभी भी थोड़ा सा एक मिनट, वर्क इज Maybe he puts it when he integrates it. एक मिनट, जब वो रिसीड हो रहा था, इन्फिनिटी से r जा रहा था, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था इस तरफ, लेफ्ट साइड. इन्फिनिटी से r पे आया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए इस तरफ लगना चाहिए हमेशा. तो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी, ओह अच्छा, ये ग्रेविटी का वर्क लिखा है, एक्सटर्नल नहीं लिखा है ना? ये ग्रेविटी फोर्स लगी है ना, मैग्नीट्यूड. तो सही है. So he's calculating the work done by तो सही है, तो ये समझ में आ गया ना? हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होगा, समझ में आ गया ना? obviously. इसका मतलब कि इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है बॉडी का, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है when it is going from r equal to infinity to r is equal to r. मतलब आ गया ना ये? अंडरस्टूड? What? Can you The repeat? gravitational force potential of a body. देखो सबसे पहले तो इस पे जाओ, यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ. यहाँ पे डेफिनेशन कहीं लिखी थी उसने दोबारा. The gravitational potential at a point is, यहाँ पे ऊपर We can read it on top. अच्छा मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली. 1 second. वो वीडियो आ रहे होंगे. हाँ. Body from infinity to where they are now. The potential energy of two bodies are work done by some external bringing the फिर चला गया to where they are now. तो अगर कोई बॉडी है, सपोज ये m1 है और ये m2 है, this is a distance r, so the gravitational potential of this m2 is what? Is -Gm1 m2 by r, right? ये समझ में आ गया ना? r ये समझ में आ गया कि नहीं सबको? ठीक है. That's the gravitational potential. या इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसका फॉर्मूला है Gmm/r. इसको लिख लो और यहाँ से फिर पूरा वीडियो में रिज्यूम भी कर दे रहा हूँ. Times m over r squared with respect to r, from infinity, as can be seen in the definition, to r. I want you to remember that this is the same principle as doing force times distance, as all you're doing is just finding the area underneath a curve. It just so happens that the force isn't constant. Alright, in any case, let's evaluate this integral. All this stuff up here in the numerator is just a constant, and dividing by r squared just means multiplying by r to the -2. So just raise the power by 1 and divide by the new power, and the integral is equal to -gm times m times r to the -1. This is just equal to -big G big M times m over r evaluated at r, subtracted from -big G big M little m over r evaluated at r equals infinity. When r tends to infinity, this expression tends to 0. So we're left with the equation for work being -big G big M little m over r. As this was the work done by our external agent, we know that this is equivalent to the gravitational potential energies of our bodies.
Thank you for watching. This was a quick summary of the definition of gravitational potential energy and its derivation using calculus. Okay. So can we apply this to how do we get the formula mgh? Oh, very good. MGH is a fake bogus formula. I It's know, formula but for kids. You are on the other side of how do we derive MGH it? now. देखो देखो ये सबको समझ में आ गया ना, इतना mg gmn m2 by r square. ठीक है, अब इसको देखो. सपोज तुम ना अर्थ पे हो, ठीक है. सबसे पहले तो हम विल फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ. कितना है बताओ बच्चे? व्हाट? एक अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? F कितना है? सपोज देयर इज कैपिटल G m स्मॉल m by r square, राइट? तो तुम ये फोर्स लग रहा है ना अर्थ का किसी बॉडी पे, राइट? तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे h हाइट गेन करती, एक बात तो पहले ये बताओ कि ये जो r है, r के रेस्पेक्ट में ये तुम थोड़ा बहुत, r का कितना कितना वैल्यू, 6400 किलोमीटर ना? तो बेटा इसमें जो तुम 1-2 मीटर ऊपर नहीं जाओगे, 100 मीटर जाओगे, ये डिस्टेंस कुछ ऐसे बोलेंगे वेरी हो रहा है कि डिस्टेंस का फोर्स मोर और लेस इट इज कांस्टेंट, राइट? यस, वी डिसरिगार्ड इट. हाँ, तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो वर्क है, ये जो, अच्छा मैं बोलता हूँ कि फोर्स है, फोर्स पर वो कितना है? जी का वैल्यू कितना है? -11. मास ऑफ अर्थ पता नहीं मुझे कितना है, शायद 6 × 10. मैं भूल गया हूँ मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू डालोगे 3600 किलोमीटर का स्क्वायर जब डालोगे तो बेटा एक वैल्यू आएगी, राइट? एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आएगी. समझ में आ रहा है? कौन वैल्यू आएगी ना? एक्चुअली वो वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. GM, ठीक है, GM. हाँ, which is basically acceleration due to, because we can count. ये जो वैल्यू आएगी ना F/m की, वो वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका क्या मतलब है कि इतने रीजन में इन दिस रीजन मोर और लेस थोड़ा सा 100 मीटर, 200,000 मीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर, तुम you can take the force to be constant, F/m to be constant, for force per unit mass to be constant. Okay, क्यों? Because the force is not varying much. Okay, yeah, therefore you can use कि ऊपर से नीचे जाने में, जब यहाँ पे तुम हाइट h गए, तुम यूज कर सकते हो mgh. Although technically you should not use, you should use okay, so then we do the same thing. That work is force into displacement. Is Sir still in the meeting? Okay, give me a 1 minute. What are you supposed to do after we finish? I think you should send it to Yes, you were asking something. Someone was asking something. Okay. Hello. Also, we have to find the gravitation. ये भी करना है अभी, बट अभी तो वो निकाल लिया ना, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लो, U इज इक्वल टू -G_m_m/r, m1 m2 by r. ये लिख लो पहले, फिर आगे बात करेंगे. देखो, फॉर बॉडीज m1 and m2 separated by distance r, the gravitational potential U is -G_m1 m2 by r. ठीक है, आगे समझ में? ये इसमें कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है. ओके, रूपक, अरिन, सक्षम, सबके सब जॉन सीना हो. नेक्स्ट देखो क्या करना है. हाँ, सपोज ये अर्थ है, यू हैव टू फाइंड द
वैल्यू ऑफ जी लिखो, वैल्यू ऑफ जी वेरिएशन. ओके, दिस इज, तो मैं आज, अच्छा ओके, आई हैव टू डिस्कस समथिंग. पहले तो इसको जल्दी से करो. दिस वैल्यू ऑफ जी ये है, लिखो एट अ हाइट, फर्स्ट केस इज एट अ हाइट h, एट एट देखो चार चीजें होती हैं, ठीक है. सबसे पहले चार चीजें होती हैं. Yeah. तो चार चीजें ये होती हैं कि, हाँ ये होती है कि यहाँ पे लिखना है तुमको. सबसे पहला होता है कि स्मॉल, और यहाँ पे हम लिखते हैं लार्ज, ठीक है. और यहाँ पे लिखते हैं अबव द अर्थ, और यहाँ लिखते हैं बिलो द अर्थ. इसका मतलब है कि, इसका मतलब है दिस टेबल मीन्स कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो पता है मुझे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, जी है, राइट. जी को हमने अभी जी नॉट बोल देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन यू आर गोइंग बिलो द सरफेस, दैट मीन्स यू आर हेयर. और जब तुम बिलो स्मॉल हाइट जाते हो, थोड़ा थोड़ा जाते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, तब क्या होता है. और तब क्या होता है जब लार्ज डिस्टेंस तुम चल जाते हो, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर. अंडरस्टूड. okay, what happens when you add the r by 2, half the radius of the earth. Okay, same thing for above the earth, small distances, 100 kilometer, 200 kilometer तक 5% of the radius तक. बेसिकली स्मॉल क्या होता है, 5% टिल अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द रेडियस, ठीक है. तो 5% ऑफ द रेडियस कितना हुआ बच्चों बताओ, 6400 किलोमीटर है. तो Yeah, I submitted it. कितना हुआ 5%? 320 किलोमीटर. हाँ 320, अप्रोक्सीमेटली 300, 100, 200, 300 तक ये वैलिड होता है, ठीक है. 5%, कभी कभी 10% तक भी इतना वैलिड होता है. उसके बाद क्या होता है, लार्ज वाला वैलिड होता है, ठीक है. तुमको लिखना है, यहाँ पे लिखना है जी 1 माइनस डी बाई आर. स्मॉल अबव गया तो 1 सेकेंड, Wait, हाँ how? मैं फॉर्मूला बता दूंगा, डेरिवेशन बता दूंगा मैं, ठीक है. Wait, what's the स्मॉल, height of the Earth's atmosphere? रुको, हाइट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, Like from गूगल करो, गूगल what करो. point does the oxygen or whatever gases still stay in Earth's gravitational? एटमॉस्फेयर गैसेस तो यार मतलब तुम्हारा जो ये होता है, कॉमर्शियल Like एयरप्लेन जो what जाते is हो the तुम, height of the exosphere or whatever we call it? मुझे नहीं देखो, गूगल करो, गूगल करो फिर मुझे बताओ. Roughly about 12 kilometers based on sea level, but varies from poles to equator. Did you hear me? Say that again. I said roughly averages out to 12 kilometers, but varies from 9 to 17, Okay. depending if you're on the pole or the Okay, why were you asking that? just like that. So when we say large, Okay. we still mean how much? So wait, this small thing is only outside the Earth's atmosphere. Small thing is only outside the atmosphere से रिलेशन नहीं है इसका कुछ भी जो मैंने बोला है. But like atmosphere can be seen as like a basic point where the gravitational force is still strong. After that, it's pretty weak. Why? Because as the distance increases, force becomes lesser. Okay. You are correct. Your statements are correct, but they are not assertion and reason of the same thing. Okay. Anyways, what is the question? क्वेश्चन कुछ नहीं है. क्वेश्चन जी जी एक मिनट को कर मुझे लिख लेने दो. gm1m2 by x y square is equal to y square होगा ना. एक मिनट, gmm by gm y square और gm कितना है, gr square. So I submitted it. 1 second, okay.
ये सी जी आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर वेयर वाई इज, हाँ ये है एक्स कमा वाई बोथ वही है, एक्स कमा वाई आर एक्स और वाई ऑब्लिक वाई, एक्स ऑब्लिक वाई इज द डिस्टेंस ऑफ कॉन्फिनेंस। ये पहले याद करना है, पहले याद करो, डेरिवेशन करवाऊंगा मैं अगली क्लास में, पहले याद कर लो उसको। ये है, ये टेबल है, याद करनी है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टेबल क्या है। सपोज तुम बहुत दूर दूर जाना चाहते हो सरफेस से, ठीक है, सपोज तुम जाना चाहते हो कहाँ पे, r/2 मतलब हाफ द रेडियस पे कितना चेक करना चाहते हो, जी कितना है, तो कहाँ पे देखना है, इस उसमें देखना, लार्ज कहाँ है, नीचे, ऊपर सरफेस के अबव है कि नीचे है, कितना है, नीचे है, कितना होगा g इंटू एक्स बाई आर, वेर x इज वॉट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस है r/2, तो फॉर्मूला हो जाएगा g r/2 डिवाइड बाई r, r गया g/2। ओके, Derive this in class, right? मैं डिराइव करूंगा, मैं करूंगा डिराइव। But what we did in like ninth, isn't it r squared? So shouldn't it be like 4 times? नहीं मैंने, नहीं वो नहीं है डेरिवेशन इसका। What is this? This is नो इट इज acceleration or force? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, हाँ जी Okay. का वैल्यू, फोर्स भी इसके प्रोपोर्शनली होगा, हाफ फोर्स लगेगा, ठीक है। इफ यू आर वेइंग 100 kg ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, यू विल वेट 50 kg ऑन द इधर मिडवे, ओके। सिमिलरली अगर तुम 4r डिस्टेंस पे जाओ दूर, अर्थ से 4r डिस्टेंस पे, तो द g विल बी, g इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई, कितना वैल्यू है y का, y सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 4r ना, तो 4r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू g/16। एप्लीकेशन समझ में आ गया? यस, व्हाट Yeah, so हैपेंड? why is it squared when we go above भाई and मैं डेरिवेशन not बताऊंगा तो समझ में squared, आ जाएगा। not a square in this case? हाँ अक्षत, मैं डेरिवेशन बताऊंगा Okay. तो समझ में आएगा। There is a lot of noise. किसका नॉइज आ रहा है? अभी भी आ रहा है? नहीं अभी ठीक है। तनुष, म्यूट योरसेल्फ। या ओके, सो these are the results। हाँ तुम अक्षत ने मुझसे पूछा सर ये कैसे आ रहा है, ये क्यों है, वो अच्छा समझ में आएगा जब डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। Okay. ओके, एप्लीकेशन समझ में आ गया कि अगर तुम 4r डिस्टेंस पे जाओगे अर्थ के, तो ये लार्ज फार्मूला यूज होगा, तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर से 4r, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, ओके या ओके ठीक है। अभी 1 - 2h/r लिख लो, ये क्या होता है 1, ठीक है, ये सबने लिख लिया, सो ओके ओके। चलो 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर लॉग पढ़ा दूंगा, ठीक है, या whoever has submitted can leave, यस। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर लॉग पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके। Hello. 11th ग्रेडर्स 2 मिनट का ब्रेक लेके लॉग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। Yeah, okay.
Hello guys, yeah, turn on your video, everyone. ठीक है, टेस्ट चल रहा है ना? नहीं, क्या चल रहा है? क्लास चल रही है, झूठ मत बोल। देखना भाई, व्हाइट बोर्ड में शेयर करूंगा तो सब कुछ आ रहा है ना, पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो झूठ क्यों बोल रहा है 9:30 तक? Yeah, video on everyone. तुझे बोलना है। So for logarithms, are we doing something new or is it just a big recap of what we did before? Wait, why are we doing log? Hello? Because it is everywhere. Log is everywhere. No, I'm asking, is it like recap of what we did before? No. Have we done log before? Yeah, we did it for math. And that time I took Kahana log from math that time. Because we have log. Okay, तो जिसको log आता है वो चले जाओ. Wait, I want to revise E, that log E. लॉग नहीं, मैं सिर्फ अभी आज पढ़ाऊंगा. सक्षम को तुमको क्या किस चीज में प्रॉब्लम है? सक्षम, हाँ, how to calculate log, मतलब कैसे करना है? लॉग का वैल्यू निकालना है ना, मतलब कैलकुलेशन के लिए, राइट? अब बस कैलकुलेशन के लिए ना, ठीक है. तो बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले सपोज लॉग ऑफ, सबसे पहले ये समझ लो, log of 10 to the base 100 2 होता है. ये समझ में आता है ना? Yeah. ये आता है सबको. बेसिकली ये रेज टू व्हाट पावर इज दिस नंबर, ओके? log of 10, तो यहाँ पे x है, so 10 raised to what power gives you x, okay? This is the basic log, okay? So whenever I say log, now I'll always mean base 10 without anything. तो जल्दी से इसका आंसर बता दो. log of 1000 कितना होगा? 3 ना? log of 10 की पावर 5 5. कितना होगा? 5 ना? So wait, one off-topic doubt about log. Is there any way to change the log base in calculators? Is there any way to change the log base in calculators while using calculators? Which calculator are you using depends on that, but you can change log bases. Casio. I think you can. Okay, I'll check on that. Scientific calculator ना? Yeah. हाँ, I think you can. ठीक है? log of 10 की पावर -7 कितना होगा? -7. अच्छा, log of ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि mn is log n plus log n, ठीक है? ठीक है? तो सपोज यू वांट टू फाइंड log of 5 into 10 power 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? log of 5 plus log of 10 की पावर 5, ओके? तो लिखते जा रहे हो ना सब लोग. दिस इज log 5 plus 5. You get it? log of 7 into 10 power 3, क्या लिखेंगे इसको? log 7 plus log 10 raised to 3. Yeah, 3. Okay. Is that 71.2 or multiplication? I will write on the next page. Swan, can you do ln also? नहीं, ln नहीं. ln is not used in calculations. Okay. अलग क्लास में दिन कर दूंगा, ठीक है? Okay, मैं फिर से लिख देता हूँ. 77.34 is कैसे लिखेंगे? log 7.734 into +1. समझ में आ रहा है क्यों +1? किसको नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो किसको नहीं आया. आ गया?
Got it. ठीक है, log of 1 by बेसिकली नहीं ये 1 by नहीं, 0.234 is log of 2.34 minus 1. ये समझ में आ रहा है? Yeah. है ना? ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसा पूछ जाता है कि सपोज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब ना कि 77.353 इंटू 21.282 इसको निकालना है, ये कितना है, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली अब कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन लॉग टेबल दे देते हैं. कैलकुलेटर नहीं होता लेकिन क्या देते हैं, लॉग टेबल. ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते पेपर में बिना कैलकुलेटर के, तो हम बोलते हैं लेट दिस प्रोडक्ट बी पी, फिर हम क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लेते हैं. तो ये क्या होता है, ये बन जाएगा क्या, log 77.353 प्लस log 21.282 इज इक्वल टू log p बन जाएगा. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फटाफट कैलकुलेटर यूज करना सिखा रहा हूं मैं, मतलब लॉग टेबल. log 77.3 को निकालना है. ठीक है, कैसे निकालना है सुनो. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो हम लिख रहे थे. क्या लिख रहे थे, log of 7.753 प्लस 1, ये समझ में आ रहा है? प्लस log of 2.181282 प्लस 1, करेक्ट, इज इक्वल टू log p. अब देखो, अब हम जाएंगे टेबल में और हम ढूंढेंगे लॉग टेबल ढूंढेंगे. ठीक है, लॉग टेबल एग्जाम में दे रखा होगा हम लोग को सामने. ठीक है, या फिर आजकल ऑनलाइन एग्जाम में तो पीडीएफ भी दे रखा हो सकता है. तो सबसे पहले मैं स्टॉप शेयर करूंगा. तुम लोग ने इतना कॉपी कर लिया है क्योंकि मुझे चाहिए लॉग टेबल इंटरनेट पे. कॉपी कर लो. मुझे ये वाली लाइन जब मैं पूछूंगा तो बता भी देना ये वाली लाइन, ठीक है, क्या लिखी थी. ओके ठीक है, अभी हम जाएंगे लॉग टेबल पे और हम जाएंगे ऑनलाइन लॉग टेबल पे जाएंगे. Are we supposed to know the log table? Yeah, you are supposed to know the log table. Nobody teaches you although. Okay. लॉग टेबल. ठीक है, तो लॉग टेबल ना बड़ी गंदी सी दिखती है, पुराने जमाने टाइप की. ओके, तो इसमें क्या करना है अपने को, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ लॉग टेबल. अब यूज नहीं होते ना एक्चुअली, जब केवी में यूज करते हैं गधे लोग. कैलकुलेटर आ गया आपको, क्यों लॉग टेबल चाहिए. लॉग किसका निकालना था, किसका था, लॉग 1 पॉइंट क्या था, Log 2.18. पहले था log 2.18 था. ठीक है, 2.18 था. तो पहला डिजिट क्या है 2, दूसरा डिजिट क्या है 1. तो 2 1. ठीक है, ओके, एक मिनट 2 1 सेकंड. ओके, हाँ सही है. 2.18 का 2.18 था ना, तो 2 1 इधर गए. ठीक है, 4 1 सेकंड. 2.1 तो 21 का तो ये हो गया 2.18. हाँ, इसमें जाएंगे 221 और इसमें जाएंगे 8. हॉरिजॉन्टल में 21, वर्टिकल में 8. क्या नंबर आएगा, 3385 आएगा. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या नंबर है, 2.18 के बाद क्या है 7.75. नहीं, वो डेसिमल में क्या वो खत्म हो गया था 2.18 के बाद. 2 था ना, ओके 2.18 2 था, राइट. तो ये जब ये नंबर मिल गया ना पहले 3 डिजिट से, 2 1 और 8 यहाँ से, तो 3385. और उसमें 2 था ना, 2 राइट. यहाँ पे हम 2 देखेंगे कहाँ है, और उसमें क्या लिखा हुआ 4 ना. तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 33889. अब हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं एक और ऐप खोलता हूँ. देखो, log of 2.182 था, राइट, प्लस log of क्या था 7353 ना. ठीक है, तो इसका जो आया था अपने को भी मिला था 0.3389, तो इसको लिखना 0.3389. ठीक है, ओके. अभी जाते हैं 7.735 पे. अपने को पहले 4 डिजिट चाहिए बस. ठीक है,
7 क्या लिखा था, 7.777735, कहाँ जाएंगे इसके में, 77 पे जाएंगे, ठीक है। कहाँ है 77, नहीं है नीचे, 77 कैसे नहीं है, 7 7 यार 7 यहाँ है, पर वो कितनी गंदी है, किसी ने पीडीएफ पुरानी डाला है। Wait, how are we supposed to know this table? It's like really long. No, they'll give this in the exam. They're allowed to take it in No, I exam. remember. Oh, See, you okay. get like a this Written in our big book or chemistry something. like portion, like the thing that you're allowed to take log tables. Obviously, didn't have any questions for log tables. अच्छा देखो यहाँ पे ना इसका वैल्यू इसने दे रखा है 0.8885, बट आई डोंट नो व्हाई लॉगरिथमिक टेबल ऑफ कॉमन लॉग टेबल्स में एक बार देख लेते हैं, एक बार और किसी टेबल में मिल जाए। उसने तो 50 पे खत्म कर दिया था ना। Wait, so is doing big multiplications the only use of log table? Big multiplication, big division, big power, anything with big numbers where you are Yep, I found log 77. हाँ कि कहाँ पे लिखा है, किस I टेबल found में? it on Pinterest. अबे यार, get out of that website before you turn 18. Otherwise, you'll always see that log tables PDF. भाई मुझे लॉग टेबल चाहिए, तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए। लॉग पीरियड टेबल दे रहा है। I'm telling you, वहाँ पे है. I can send you the link. भेजो भेजो, दिखा दो नहीं तो स्क्रीन शेयर करके। हाँ ये रहा, मिल गया देखो। हाँ ये देखो 60 के बाद एक्चुअली नंबर ठीक से लिखा नहीं है, ये लॉक टेबल है, ये लॉक टेबल नहीं है। तुम मुझे भेज दो फोटो अगर है तुम्हारे पास तो। Yeah. Should I screen share or just? फोटो भेजो। कहाँ भेज रहे हो? What's up? व्हाट्सएप भेजा क्या? Wait, 1 second. I'm sending it. आई थिंक आई गॉट इट हियर। हाँ ये मिल गया। छी, कौन कैसे देखूंगा मैं इसमें? देखो कितनी पुरानी चीज है, इसका किसी ने फोटो में डाल के रखा और ये वी आर स्टिल यूजिंग इट। हाँ मुझे पता, चलो ये यूज कर लेते हैं, ठीक है फॉर नाउ। Okay, I've sent it. तुमको देखना तो आ गया ना कैसे करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे Yeah. 0.8885, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, और +2 भी था ना, इज इक्वल टू लॉग प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? Yeah. समझ में आया? अब क्या करना है, ये सारे ऐड करो, क्या आएगा? एडिशन इज इजियर देन मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐड कर लो, कितना आता है? कैलकुलेटर से ऐड करो जल्दी से। 2 + this + this। Wait, how do you know how to put so many decimals? क्या फिर से बोलना? ये तो मैंने ये यहाँ से किया है। No. हाँ। Decimal. डेसिमल कहाँ पे है? Yeah. ये 0 पॉइंट कहाँ लगाना है ये? Oh, okay, got it. ये तो हमेशा यहीं पे आएगा क्योंकि मैं हमेशा क्या Yeah, कर रहा हूँ, 4, इसको 4, रिड्यूस yeah. कर दे रहा हूँ ना। Yeah. कितना आएगा ये? कितना आएगा जल्दी बोलो। 3.2239। 3 पॉइंट होगा ना बेटा, 8 3 11 3.2239 हाँ इज इक्वल टू लॉग पी, ठीक है, ठीक है। तो बेटा p कितना होगा? a लॉग एंटी लॉग, ये जब लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा 3.2239, ओके। एंड अब इसके लिए, इसके बाद यू हैव टू गो एंड सी द एंटी लॉग टेबल, ओके। कौन सा टेबल? एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग टेबल देखने के लिए यहाँ देखो,
Is it the same like तो हाँ उसी में नीचे होता है, वहीं पे नीचे होता है। और मैं in the way is the same? सेम वे, हाँ सेम नहीं, थोड़ा शायद अलग भी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। You won't see this. अरे Wait, nobody uses log anymore? और नहीं यूज करते ना तुम्हारे एग्जाम्स में, उसके अलावा कहीं नहीं। That's so stupid. एंटी लॉगरिथम टेबल देखो क्या होता है, कितना आया था तुम्हारा 3.2239 ना, इसमें से जो पॉइंट के पहले वो हटा दो, ठीक है, Okay. पॉइंट के पहले वो हटा दो, और 0.2239 की बात करते हैं। 0.2239 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 0.22 पे जाओ, एकदम ऐसे ही 0.22 इधर है, दिख रहा है ना, मैं जूम कर देता हूँ, 0.22 इधर है, 0.22 और फिर 3 कहाँ है, ये 3 है, ये वाला 012 थर्ड ये है, राइट, ये वाला एरो Yeah. है, 0.223 167 है, 0.1671 राइट, Yeah. 167 है, Yeah. 1671 और फिर ये तो नंबर याद रखना, और कहते हैं 0.2239, तो 9 ऐड, देखते हैं ऐड क्या करता है। डन मैन डन, ऐड, अगर यहाँ 9 है तो 9 लास्ट में आ रहा है, और 22 था तो 1671, उसके आगे ऐड 3 करना है ना, Yeah. तो 1674 हो जाएगा ना, Yeah. 1674 हो जाएगा, तो इसको 3 ये हो जाएगा 1674, लेकिन मैं इसमें भूल गया डेसिमल कितना लगना है, इंटू 10 पावर 3, यही होगा क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, 1.67 नहीं 0.16, एक मिनट, तुमने, मैंने जो एकदम ओरिजिनली क्वेश्चन दिया था वो क्या था बताओ, 77.353 0.353 इंटू into 21.282. 282, ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 77.353, फिर से बोलना, ठीक है, 77.353 स्टार 21.282 ना, Yeah. 17116.8265 ना, Yeah. 17116.8265, अब देखो इसमें 17 यानी कि 1 पॉइंट है, एक मिनट, इसको अगर मैं साइंटिफिक लिखूंगा तो लिखूंगा 1.7 10 पावर 4 नो, Yeah. ये नहीं मैंने गलत कर दिया, 2 पॉइंट ये गलत है, Yeah. कितना था 21.282 ना, Yeah. हाँ 1646.22 ये है ना, तो इसका मतलब ये कितना है 1.646 इंटू 10 पावर 3, करेक्ट, 1.646 इंटू 10 पावर 3 राइट, हाँ, तो तुमको यहाँ पे जब ये 2239 कर लोगे, ये तुमने 3 अलग साइड में कर दिया था, 0.2239 का 1.67 है, ठीक है, Yeah. ओके, और 1.67 और फिर जो 3 था वो 10 की थर्ड पावर में आएगा, तो देखो मैंने लॉग टेबल से जब आंसर निकाला तो मेरा आंसर आया 1.67 10 पावर 3, और जब मैंने एक्चुअल निकाला तो मेरा आंसर आया 1.646 10 पावर 3, क्या दोनों क्लोज में है, क्लोज है ना ये, मतलब प्रीटी क्लोज, लेकिन हाँ पुराने जमाने के साथ बहुत क्लोज है, ठीक है, So which one's right? ये करेक्ट आंसर है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, ये दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ओके, तो लॉग टेबल से बेटा एग्जाम में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करनी होती है, लॉग टेबल से जो आंसर आता है वही एक्सेप्टेड होता है इन सीबीएसई एग्जाम्स, ठीक है, अब मैं तुम ये मत बोलना सर मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो करना है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाले काम नहीं करने हैं, उससे लॉग वाले काम करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या तुमने अभी तक लॉग टेबल यूज किया है किसी एग्जाम में, क्या तुमको लॉग टेबल दिया गया है किसी एग्जाम में, नहीं दिया गया है तो 12th में दिया जाएगा, 11th में केमिस्ट्री में शायद देश, हाँ Yeah, it was there in chemistry. केमिस्ट्री में हो सकता है, केमिस्ट्री में होता है लॉग टेबल, थर्मोडायनेमिक चैप्टर होगा तो होगा, Yeah, in that. उसमें था, ठीक है, क्योंकि लॉग वॉग की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो एक दिन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और पूछ लेना, बता दूंगा उसमें कैसे यूज होता है, Okay. थर्मोडायनेमिक्स में भी होगा और शायद इक्विलिब्रियम में भी होगा, ठीक है, ओके, Yes. अभी बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया कि प्रोडक्ट को कैसे करना है, Yeah. डिवीजन में वैसे हो जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा बस, क्योंकि log m by n इज log m minus log n, समझ में आ गया ना, ठीक है, एक काम करना, एक वीडियो देख लेना, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 नंबर यूजिंग लॉग, वेरी सिंपल, टू बिग नंबर्स यूजिंग लॉग, और एक वीडियो देख लेना, हाउ टू डिवाइड 2 बिग नंबर्स यूजिंग लॉग, वेरी सिंपल, ये 2 वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है,
ओके Yep. देख लेना जरूर आज, क्योंकि आज पढ़ाया है तो आज ही Okay. खत्म कर दो, ठीक है? बाय। Bye, sir. Thank you.